हेलो फ्रेंड्स, officegan.com वेलकम्स यू। आज हम फिर से कुछ नया पढ़ने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइक डेटा मेंटेनेंस सिचुएशन सिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और स्पेशली इन ऑफिसेस, स्पेशली फॉर सेल्स पीपल, स्पेशली फॉर मार्केटिंग पीपल, स्पेशली फॉर फाइनेंस पीपल, जिनको कि काफ़ी बड़ा डेटा मेंटेन करना पड़ता है, और हाउ लाइक दे विल मेंटेन दैट डेटा। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ आई एम हेडिंग वन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल्स, उसमें मेरी जनवरी की सेल्स, मेरी फरवरी की सेल्स, मेरी मार्च की सेल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, फैब सेल्स, मार्च सेल्स, अप्रैल सेल्स, मई, जून, यानी कि मैंने एक हाफ ईयरली सेल्स का एक चार्ट लिया है। यानी ये 6 मंथ्स के 6 सेल्स रिकॉर्ड हैं किसी भी कंपनी के। द कंपनी इज वरुण पब्लिकेशंस। वरुण पब्लिकेशंस प्रोडक्ट इज लाइक मैगजीन्स, बिजनेस वर्ड, वुमेन्स वर्ड, करियर पाथ, कंपटीशन एज एन एंट्रेंस ग्रुप, एंड दीज आर द रीजन ऑफ द ऑल ओवर इंडिया। लाइक ईस्ट में कितना बिकता है, वेस्ट में कितना बिकता है, नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल इंडिया में कितना रेवेन्यू आता है, किस किस मैगजीन से, ये कैलकुलेट करना है। सो लाइक दैट सेल्स गाय क्रिएटेड द वेरी गुड फॉर्मेट, लाइक zone wise, product wise, the total. For example, like only 5 rupees coming from business world, 5 rupees coming from this, 5 from this, 5 from this, 5 from this, so total is 25 rupees each से आया revenue. Percentages total 100%, right? Total 100% revenue हो गया for the cross checking, and here total is 20% of the revenue. I already put the formula, I can show it to you. This is the normal divide formula, total into 100 percentage wise and all. 20% आया. For example, like I can say the west, like 2 rupees, 2 rupees, 2 rupees, 2 rupees, 2 rupees. So now you are saying the total, now the revenue is coming, 28% revenue is coming from west, 71 is east, total that cost revenue is 100%, and here the business word is revenue 20%, women's word 20, 20, 20, every magazine is contributing 20%. So this is the overall things. I want to calculate the total of the revenue, that is the 35 rupees of the revenue. So this is a normal, you can say this is the normal calculation for that one table. The same formula I applied for the second, same formula I applied for the third. Formula is very simple. Like here I put it the normal if sum function, and here I put it the normal percentage function, dividend, right? So this is the function. But now biggest challenge in front of me, ये मुझे 6 शीट्स हैं, ये केवल हाफ ईयरली की है, एक साल में मुझे 12 शीट्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। सपोज मेरे को लास्ट 5 इयर्स का रिकॉर्ड रखना हो तो आई हैव टू मेंटेन 60 शीट्स। तो मुझे अगर कोई समरी रिपोर्ट बनानी है कि इस ईयर में कितना हुआ, हाउ आई कैन कैलकुलेट इट। इसमें एक बहुत बेहतरीन फंक्शन है एक्सेल में, मल्टीपल शीट्स को सम करना। Not even sum, you can apply other formulas also in multiple sheets, but आज मैं आपको sum से start करूँगा। So how we can calculate? So there is a one process is the standardized process जिसको normally लोग use करते हैं, that is put sum function in your summary sales, then directly jump to their first sheet, that is a January, select the same row, suppose first row that I selected B3, selected, put the plus sign, the formula is coming, come the second sheet, select the same column, put the plus, third sheet, select the same cell, put the column plus, this is the April, select this, put the column plus, again come for select it, again plus, then again sales, again select, and then bracket close and enter. I'll come the my summary sheet. यहाँ पे आप देखेंगे 0, it means some formula is put it. That formula आपको reflect कर रहा है ये कितना बड़ा formula है, right? So first of all हम अपने formula को check करेंगे, is it properly working it or not. So like I'm putting like sales same like that, 5 rupees in Jan, 5 rupees is Feb, 5 rupees in March, 5 rupees in April, 5 rupees in May, and 5 rupees in June. So like I put it 5 rupees in 6 months, and when 6 5 the 30, yeah, so my sum is 30. So formula is absolutely right, it's working properly, right? Now I'm going to tell you one more thing. Like you are seeing, these tab are different colors, this is the without color. How we do this?
put the click on this left click, and there's a tab color. You can select any color. I'll select one like this. So this tab is, you can color your tabs also. Yeah. So now come to the next, our main point. This is the formula. बट अगर मेरे पास मुझे 12 शीट्स कवर करनी है, या फिर आई एम हेडिंग इंडिया जहाँ पे 28 स्टेट्स, मुझे एक मंथ में 28 शीट्स कैप्चर करनी है. इवन आई एम हेडिंग अ बिग स्टेट ऑफ इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश, they having 78 districts, 72 districts. I have to maintain 72 sheets. How I can maintain it? Yes, I am having a very shortcut method for this. Apply this, working on the same, put a sum function, go for a first sheet. Yeah, first sheet I will come, then press the shift key and directly go for a 6 key and click it. So it acts as a formula. You are saying January to June, यानी ये सारी sheets लेगा. Then select the one cell. This is the cell I selected, B3. Same, bracket close, and again the formula is same. So now it's a very shortcut and very like less time taking process for the adding multiple sheets in Excel. एक से आप कई ऐड कर सकते हैं. And now we can drag and drop, because हमारा we can easily drag and drop. And now I can like enter any value. Suppose is center, value is 8. Then again month I'm putting 8. Then again month I'm putting 8. Then again I'm putting 8. Then again the same process, 8 and दोबारा से 8. Now 8 6 is 48. Yeah, so it's properly working. So yes guys, this is a very helpful formula, and this is a very helpful method for adding multiple sheets, especially for professionals, those already in sales, finance, marketing and other technical fields, and especially for the MBA students, those are in their colleges and they are ready to step in the professional world. Best of luck for all of you. Thank you. OfficeGyan.com.